Just imagine you're in the water, cold water, it's humid, and there are all sort of trees, forest around you. Hey guys, welcome back to the channel. This is your host Keith. You're watching Wild Act. I just visited a place in the outskirts of Mumbai, and I'd like to share my experience with you all. It's a beautiful place, trust me guys. I'll just show you all this place. I'm just going to narrate this to you. You'll get to know the reason why. So I started my journey in the morning at around 7ish, and there was one of my colleagues who was waiting for me at the Hub Mall on the Eastern Express Highway in Goregaon. So I had to meet him, and then we started riding together. And it was amazing ride. There was a bit of traffic at the Dahisar checkpost and the Dahisar check naka, and later on then there was a bit of traffic near the Fountain Hotel. After I crossed the Fountain Hotel, there was a bit of bad roads, a patch of bad roads that I found, and it was a bit of difficult for me to ride, but I did manage. We then halted out for a chai break at the nearest tapri to have a chai and vada pav. So now we've just halted and we've taken a break. We'll just have a cup of chai and little bit of vada pav, जो भी अपना मुंबई का special vada pav खाएंगे, and then we'll leave from here. Around 40 odd kilometers. So let's see, and a lot of bikers gathering around here. So hopefully you'll get some company. I'll catch you on the bike race. So after a chai break, we then enjoyed a journey. Both me and Faizan were enjoying our ride, and we were cruising as the roads were empty. Some good sort of scenic views, and we were all good to go. Around 40 kilometers we had to travel, and we were really enjoying the journey. At this point, you just need to take this service road and take this right, which will lead you into a village. We halted out for another stop and decided to carry some sort of food stuff. There is a cart out here, and the villagers do sell snacks again, vada pav and misal pav. We took a lot of information from them in regards to where this waterfall is, and they were very helpful, and we carried our snacks so that we can snack on after we have enjoyed the journey and enjoyed the waterfall, because we had just carried water along with us. So we decided that it was around 9ish. We then continued our journey. We need to take this left, and you'll find this bridge where you can see a bit of water. You'll enjoy a lot of greenery as the roads are narrow. You just need to be careful, but however the roads are amazing and a lot of greenery, and if you're a nature lover, you'll enjoy it. You need to take a left out here. Make sure you just do not go straight, because as you can see Faizan, he went straight and then I had to halt and call him back. So just make sure that you take this left. There he is. He went on to a different direction. I then chased him up and told him to follow me, and then you again get into the narrow lanes. A lot of greenery around, a lot of fresh air that you can feel out here, and you'll really enjoy. You can just fill your lungs with a lot of fresh air, and it's all very scenic. Hey guys, so we are here at Belvadi village. I told you that I'm going to reveal the name once I reach the location, but we are just beyond the location, and right now we just halted because we just wanted to explore this place a bit. Because क्या होता है कि हम लोग सीधा स्पॉट पे जाते हैं, पर जो अगल बगल की जो जगह है वो देखते नहीं है. इतनी खूबसूरत जगह है, जैसे कि मुझे पता नहीं, बट इफ़ यू सी इट्स सो ग्रीन आउट हियर. खेती होती है यहाँ पे. तो दिस इज द राइस फील्ड्स. आई लाइक टू विजिट सच प्लेसेस. गाँव में ऐसा खेती भी देख के ना अच्छा लगता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर लोडेड विद वर्क, जो भी काम घर का जो भी रहता है वो यहाँ आके मतलब पूरा माइंड वॉश हो जाता है एकदम नेचर में आके. लॉट ऑफ ग्रीनरी. दैट्स द हाईवे यू कैन सी देयर बिहाइंड, एंड देन यू टेक द इनर रोड एंड यू कम टू दिस प्लेस. इट इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल. वन डे ट्रिप अगर आपको मारना है तो इससे अच्छी जगह आपको मिलेगी नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइस, this is one of the beautiful places and unexplored by many. So if you all are planning to come out for a bike ride, you can do come to this place. Waterfall में आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि how the waterfall is. और एक बात बोलना भूल गया कि जो भी ऑडियो अब तक रिकॉर्ड हो गया ना, वो अनफॉर्चुनेटली पूरा उसका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. ऑडियो में कुछ इशू हो गया, ड्यू टू विच आई विल नरेट इट एंड रेस्ट आई जस्ट टॉक टू यू ऑल वंस आई रीच द लोकेशन. सो गाइस, ये पूरा ऑफ रोडिंग पैच है. अरे बाप रे,
यहाँ पे बाइक को आप पार्क कर सकते हैं. यू कैन जस्ट पार्क योर बाइक आउट योर. सो दिस इज़ द प्लेस. सबसे पहले तो बाइक यहाँ पार्क करते हैं. क्या बात कर रहा है? ओह शिट. अरे जा 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 जल्दी जा. मैं रुकता हूँ यहाँ पे. Alright guys, so we have reached the destination. This is the Belvadi waterfall and it was a bit of off-roading. ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ अराउंड 5 मिनट का off-roading है और गांव के अंदर ये ज़्यादा दूर भी नहीं है. It's an amazing place. You can get in and I'm sorry for the audio. मतलब कि I actually पूरा information दिया था when I was like riding, पर अभी because of the audio मुझे voice over करना पड़ा. Hope that you will be able to understand the directions how to come about here. और it's a beautiful place. अभी यहाँ से हम थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा वॉक करना है बस और पहुँच जाएंगे. एंड फैज़ान का जो बैग है वो मिल गया है लकीली. जहाँ पे हम लोग ने बैग रखा था टू क्लिक पिक्चर्स एंड ऑल, वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आते जाते नहीं है. ड्यू टू विच ही इज़ गॉट हिज बैग. भाग भाग के गया. मुझे भी पता था कि मिल जाएगा क्योंकि उसने कोने में रखा था, तो मिल गया बैग उसका. तो नाउ वी आर हेडिंग, विल वॉक अ बिट. ठीक है, ये एंट्री गेट है. यू कैन जस्ट पार्क योर बाइक आउट देयर. और यहाँ से अभी चलना है, तो आपको अभी थोड़ा सा चल के मज़ा लेंगे. एंड विल सी, चेक आउट दिस प्लेस, अमेजिंग. यू कैन हियर द चॉपिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स. एंड यहाँ से एक्चुअली बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे जो हरियाली है, खेत दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. यू कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी आउट हियर, द लॉट ऑफ trees and there are fields by the side. It's typical village, and wherever you go to visit a waterfall, you will always find it somewhere near the village. So just need to keep trekking a bit. इसको ट्रैक भी नहीं बोल सकता है, it's just like around 5-10 minutes का walk है, बस पहुँच जाएंगे. यहाँ पे I can see, I don't know if you can see, but there are small sort of butterflies and dragons. जिसको चितरून बोलते ना, क्या बोलता था यार उसको? चितरून बोलता था ना, जो ये फ्लाइज को, ड्रैगन फ्लाइज को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो व्हाट दे कॉल फॉर इट. चितरून में हम लोग तो जो मराठी में ना चितरून बोलते हैं उसको. तो चितरून और फूल पाकरे वो सब इधर आपको मिलेंगे. बट देयर आर वाइल्ड फ्लावर्स. आई डोंट नो व्हिच फ्लावर दिस इज. देयर आर लॉट ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड ट्रीज. सो another hurdle here. So there behind there is another gate which you just need to cross. I guess that is just a small hurdle. एक अच्छी चीज़ है कि बारिश नहीं हो रही है. जब भी आप ऐसे जगह पे जाते हो ना, तो अपना अपना पानी कैरी करो क्योंकि प्यास लगती है और भूख भी लगती है. हम लोग ने वड़ा पाव लिया था जब हमने एंट्री किया था, तो वड़ा पाव खाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे. अमेजिंग. आई थिंक ये नहीं है, अपने साथ क्रॉस करके जाना है और आगे. हाँ, ये तो शुरुआत है शायद से. ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा फ्रेश हो गया पानी भी मार के, जो अपना पुराना स्टाइल है. जो भी ब्लॉग्स देखेंगे, ऑलवेज कम टू द वाटर बॉडी एंड वॉश योर फेस विद द वाटर. बहुत फ्रेश लगेगा. तो अभी हम लोग को थोड़ा चलना है यहाँ से एंड और थोड़ा आगे जाके वाटरफॉल है. It's going to be very difficult if you are not wearing any sort of shoes because it might be painful with the rocks, the pebbles down. That was the third hurdle or the third gate we have crossed. तो टोटल 3 गेट हो चुके हैं. दिस इज एक्चुअली ट्रैकिंग टू द वाटरफॉल. ज़्यादा दूर नहीं है बट ठीक है. ते झरणं कुठे आहे? झरणं समोर लांब आहे काय? ओके. पिकल विलेज लाइफ, ये उनकी खेती है शायद से, पूरा खेत. दिस इज़ द विलेज एंड द लेडी आई स्पोक टू जस्ट टोल्ड मी द वाटरफॉल इज़ नॉट क्वाइट फार. बाल ना मेरा इतना बड़ा हो गया, घड़ी घड़ी आँख पे आ रहा है. आपको लगता रहेगा स्टाइल मार रहा हूँ. और एक गेट है, और एक गेट, ये 14 गेट है अभी, तो हम लोग गेट ही क्रॉस कर रहे हैं. वन थिंग गुड अबाउट दिस प्लेस इज द वाटर इज़ वेरी क्लीन. नॉट मच पीपल अराउंड हियर, so you can easily come in and in a group of around at least 10 people will still enjoy because the water is that clean and it's not quite deep as well. You can easily, you know, just enjoy your day in the water, which we are going to do now.
Alright guys, so we have reached this place and this is called the Belvadi Dam, and ideally it's a Belvadi waterfall, but I can't see a proper sort of waterfall जैसे कि होता है ना ऊपर से पानी गिर रहा है वैसा. So there isn't anything such as that. We did trek and all I can see is this sort of water flowing through the rocks, and that is it guys. So anyways यही है जो है. So मज़ा करेंगे यहाँ पे और क्या. अभी I already changed, I'm going to get into the water and enjoy this place. Any information you can just check in my description. It's a beautiful place. Just have a look at this place. I'll just have a swim. So take care. I'll talk to you later. Alright guys, so this is the place. अपना भाई ऑलरेडी पानी में उतर चुका है और मैं इधर व्लॉगिंग कर रहा हूँ और भाई फुल मज़े ले रहा है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट इनटू द वाटर. चेंज कर लिया मैंने फुल. अभी चलो भाई, मज़ा आ रहा है. अरे वाह वाह वाह. अभी व्लॉग करके ना इतना मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, पर वंस गोप्रो रख दिया साइड में तो आई विल रियली एन्जॉय दिस. आई रियली एन्जॉय दिस. वो बहुत मज़ा आ रहा है यार. मज़ा आ गया. बोलते ना आपको ऐसा मज़ा नहीं आएगा, आपको इधर आना पड़ेगा. वंस यू कम हियर नो गाइस, पूरा सुकून है, सुकून. देखो ना कोई नहीं है यहाँ मेरे अलावा. यहाँ पे कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं और फुल प्राइवेट पूल का मज़ा ले रहे फुकट में. एक चीज़ बोलना चाहूँगा बॉस, इधर आते हो ना गंदा मत करो, आओ मज़े करो. खाना पीना जो भी लेके आ रहे हो, यू जस्ट कैरी दैट थिंग अराउंड एंड टेक इट. मैंने देखा है कुछ जन यहाँ पे बॉटल रखे दारू वीरू पी के, बट प्लीज़ डू नॉट डू दैट यार. बाकी खुद ऑन मज़ा करो. अभी मेरे को कैंपिंग का सीन पता नहीं इधर भी कि कैंप कर सकते हैं, शायद से कर सकते हैं, बट नो आइडिया. पर अगर कैंपिंग आप चाहे तो इधर कोशिश कर रहा हो गाँव वाले से पूछ के कि अपन इधर रुक सकते हैं क्या. शायद से उन लोग मना करेंगे ऐसा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन. बट यहाँ पे अच्छे से पर इधर पे कैसा है कि अगर बारिश जोर से हो गया ना तो ये शायद से भर सकता है, तो वही प्रॉब्लम रहेगा. बट बाकी आप आ जाओ यार, पूरा दिन इधर बिता सकते हो मस्त एकदम फैमिली पिकनिक. थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, बाइक उन्हीं बाइक इज़ अलाउड उधर. आपको फिर गाँव में किधर पार्क करना पड़ेगा इफ़ यू आर कमिंग बाई और कार. बट फॉर 2 व्हीलर्स you can just come the place which I showed you all, stop it and then you have to walk in. That's around कितना 20 to 25 हाफ एन आवर पकड़ो, चल चल के आप आ सकते हो. एक क्रॉसिंग है, वाटर क्रॉसिंग. आप चाहे तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. यू कैन कम टू दिस प्लेस, मतलब जिधर पे आप चाहो आप उधर पे आ सकते हो. ठीक है. सो फैजान कुछ बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों से? So guys, as you already know that we are at Belvadi village. It's a Belvadi waterfall. Yeah. Belvadi waterfall, but there is no waterfall technically. But this is a very isolated place, and I love this place because as you can see there is no one around here. It's like a private pool we are enjoying at free of cost. Yeah, so do come over here, do visit this place. Do visit this place. मतलब आपके if you're like a explorer, you can just come in and enjoy this guys. मतलब मैं why I'm recommending this place because there isn't anyone. और फुकट में आपको ऐसा जगह मिल रहा है. If you go to any place like पेल्घार डैम जो वांदरी विंदरी लेक जाएंगे ना, वहाँ पे तो crowd मिलेगा. There might be some restrictions. Here there is no restrictions at all, and very less people might be knowing about this place because मेरे को खुद गूगल में सिर्फ चेक किया मैंने ऐसे. I just came and just wanted to see, and अभी पहुँचते हम लोगों को 10 बज गया because we reached at 9, but then we were just exploring the village. थोड़ा फोटोज़ खींच लिया. मालूम है ना कैसा होता है. तो जस्ट इमेजिन यू आर इन द वाटर, कोल्ड वाटर, इट्स ह्यूमिड एंड देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट अराउंड यू. ये देखो, और हम लोग का बैग है उधर पे, यू कैन सी देयर, दैट्स अ लगेज. एंड नेचर ही नेचर, पूरा जंगल है ये, और थोड़ा गांव बस्ती है वो साइड पे. और पीपल दे डू कम and they fish out.
ऑलराइट गाइस, तो मैं क्लोजिंग देना भूल गया. सो आई जस्ट होप यू ऑल एंजॉयड जो भी आप लोगों ने देखा है, एंड वट एवर आई ट्राई टू पोर्ट्रे. आई जस्ट होप दैट ये जगह आपको पसंद आई, एंड इफ यू डिड, प्लीज टू विजिट दिस प्लेस. एंड एनी इन्फॉर्मेशन यू नीड अबाउट दिस प्लेस, यू कैन जस्ट गो टू माई डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू ऑल वांट यू कैन ऑल्सो जस्ट कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ट्रस्ट मी गाइस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 o'clock राइट नाउ. हम लोग ने अच्छा खासा मैं व्लॉग भी किया, कैमरा साइड में रख दिया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ, एंड वी रियली एंजॉयड इट. एंड आप लोगों ने देखा है कि जगह कैसी है. सो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लेट मी नो. With this, I'll end my vlog, guys. I'll see you all soon in the next vlog. Till then, take care. Stay home. Stay safe. Bye, guys.